5 to 10 इंडस्ट्री मेंटर्स हैं जिन्होंने बनाई है प्रोडक्ट्स, जिन्होंने स्केल करे हैं, उनसे आप बात कर पाओ, वैलिडेट कर पाओ, एक आपको वो वाला एटमॉस्फेयर मिल पाए. लाइक द कॉलेज फोकसेस ऑन डिग्री, द कॉलेज डज नॉट हैव अ फोकस ऑन स्किल्स. एंड लाइक if I go back to my time again, most of my peers were either studying for like MTech. Hi Vedansh, welcome to JS Cafe for today's podcast. Hello Vedant, so nice to be here. Yeah, a pleasure to have you on this channel, Vedansh. And since it is the first time we are having a podcast, would you like to give a short introduction about you? Like from which college you started on and what was your journey like? Got it. So if I look back at my journey, I did my graduation from KIT, Ghaziabad, same college which you went to. And then I graduated in 2015, joined HackerRank, which was, I stayed there for 5.5 years. In parallel, worked with Navgurukul, which was a very small team back then, to teach underprivileged students how to code and help them get tech jobs. And then started Devsnest in 2020. Initially, we were looking at this more as a not-for-profit. Right? In 2021, when me and Kshitij came together to build it at a lot more scale, we were looking at it as a not-for-profit, and then we realized that a for-profit model makes much more sense for the type of impact which we are seeking, and we started building that. It's been 3 years. It's been close to 3 years now since we started. Okay. Wait. Did you check the JS Cafe website? Here you can find the solutions to all the problems that I've solved on the channel. Plus, you also get an organized curriculum in the form of roadmap to help you crack any interview. So what are you waiting for? Go to jscafe.dev and start your front-end journey with us. Okay, so let's rewind back to the time when you were in the college. So how was your college life starting from first year to the final year of your college, and what were the various ups and downs you faced? Like there's always a downside of being a student of a 3-tier college. So how did you cope up with that, and how did you landed on HackerRank? That would be an exciting, inspirational story for all of the viewers. So would you like to tell us how was it for you? Got it. So I always loved programming. Like I did not have a laptop till school, like till my second year of college. But in school, like was really interested. Read Wozniak's biography in class 11th and tried to build like some program which he was working on initially, like, and used to run those in my lab, like in the college, in the school lab. Like when I came to college, it was kind of a culture shock because like hardly anyone, what my vision of college was like, like everybody is programming, or there's like very cool vibes of people discussing tech stuff. And it was exactly opposite of that, at least back then. And I think first year we were staying like 20 kilometers off from college. So we had no internet connection, no laptop. So I think that was, I wasn't programming anything in the first year. Second year is when I got my laptop. A friend of mine was running like a very small computer club back then. I started working, like started learning from him a bit. And I think got interested in DSA. HackerRank is just like, I was a decently early user of the website. So it was easy to get that gratification and like a decently top rank, like not in the top 10. So, but like, I remember getting like a 20th rank and like a 100th rank in world level competitions. So like, okay, that gave me like, okay, I can do this. And that gives you a sense of gratification. And then we were working on cloud computing projects. Like we were deploying, I forgot the name, a very famous cloud computing setup, which we were deploying in college, and college gave us the permission to bunk like the second half of the college. I think I remember the name like in some time, but yeah. So that was a very exciting time because if you do not have to take classes, you can actually code, and you do not have to to actually code. You do not have to skip 9 to 5, like where you have to be in classes. So I think, and my third year was very, very good because of that. Like initially it was getting a bit frustrating because we weren't getting a lot of time to code. But I think most of my third year
my second half, I was just programming. And shout out to all the teachers and everybody who really helped us in that. Like, and we got like a lot of infra. Like we got like right now it looks like nothing. It's like one MacBook, but back then it's like, okay, 2 computers with 8 GB RAM to deploy all of that. And then in my final year, I mostly skipped like 6 months of college without like letting the college knew that I'm actually going for an internship. And it was very difficult to manage internships. Like I was this close to getting a year back. And then right, it literally took like all the classes for 2 months or 3 months, like from 9 and some extra classes to make that up. But I think it was all worth it because the time I was having in Bangalore in my final year with the internship, I was the only person handling like the mobile app and everything for a startup. And we were literally deploying and, showing it to the customers, like, okay, what this app is. So I was responsible for almost everything from coding to the final product, some bit of designs because the designer was part-time. So everything in general, it was fun. So I think that process really helped. Oh, hey there. What you are looking at is the Discord community of JS Cafe. Are you a front-end developer looking for a community where you can connect with others in the industry, get mentorship, and find jobs and internship opportunities? Look no further. I am excited to announce that I have launched a new Discord community exclusively for front-end developers. Whether you are a beginner or an experienced developer, our community is the perfect place to share your knowledge, resolve doubts, and learn from each other. To join the Discord community, you can visit the About section of the YouTube channel and you can find the link. Now let's continue to the video. And when I came back to college, I was pretty confident that I would not have to sit for college placements. I did sit for a bit. Like I have mostly skipped most of my placements, which happened in college. And I came back very, very late from Bangalore. But since there was a parental pressure, I started sitting for like some of them and I really hated the process. Like 2 days of waiting for answering those, like those aptitude questions back to back. And like, okay, I knew like, there were some websites. I think there was HasGeek back then. I think it still has jobs, which had some startups which used to, and they were like, I think they were every day there were 3 or 4 new jobs posted. So you used to apply to each one of them, or like me and my friend, we used to, because we had a very similar resume and we had mostly worked most of the projects together, we used to apply to half of them. Like, half of them I'll apply and half of them you'll apply so that they don't cancel us out. And I got a great job in one of like very cool startups coming in Noida. So I joined them for like 30 days and I had just started to become active on Hacker News. So I was reading Hacker News. There was a post by, I think, HackerRank CEO Vivek, right? They are hiring. And this was the first time I just applied online, got an offer. So in those 30 days, I was interviewing and it was a pretty long, I think it was like 4 or 5 steps of interview process. I got into HackerRank and then there was no looking back. I was like, okay, I'm moving to Bangalore. So I was very, very interested in moving to Bangalore because all of my friends and all the people who I've met in the last 6-8 months of college and whom I regard as like very cool tech buddies, they are in Bangalore. So like, okay, I want to learn from them. I want to be around them. Let's move to Bangalore. So hence I moved to Bangalore. Okay, so that was a lot to take in. So I'll break things down for all the users. So how did you got introduced to HackerRank? Like who introduced you? Was it the role of your teammate or your friend? And once you got introduced to HackerRank, then how did you plan out things to get better ranking on HackerRank? So what was your strategy back then? Now if I look back at like I'll laugh at it. So I think most of the people who were interested in programming in college were mostly like a lot into DevOps and like there were 2 or 3 seniors whom I really attribute like a lot of success and like they guided a lot, but their interest was mostly towards Linux. I think in like I was like, as I told, right, in my school I was decently fond of programming, but we were mostly like just writing programs in our copies. But I think I had that programming sport kind of patience, and I think in my first year we participated in, I think me and a friend, we participated in some of the programming competitions in college.
We're like, okay, like how can I practice more? So the courtship was one of the first sites which came. And then I was struggling going beyond like, the third or fourth question on courtship. I think mostly it was more about the difficulty of the language rather than the question itself. Like, had I understood the question, would have solved it. But I think back then you don't know what the input is, what the terminal is. And I think it was on Facebook or something. I think it was a very active user of Facebook. So I think somebody posted about HackerRank, joined that, and just started solving questions. Yeah. And then, and I used to struggle. Like, after easy and medium, rarely used to solve hard questions. And I think that was one question which I used to ask a lot of people. So wasn't extensively familiar with YouTube. And I think back in those days, college Wi-Fi banned YouTube. And so banned YouTube, even banned Stack Overflow for like a lot of time. And there was like your Wi-Fi was like, for like your internet or like your personal internet was like super costly. Like it was like 300 or 400 rupees per 1 GB. So it wasn't at all feasible to get that. And so I think we like the YouTube got unbanned in our final year. But before that, I was very active on Quora. I was asking a lot of questions. Like I was reading a lot of answers by people like, okay, how do you get better at it? And I think at some time I was just procrastinating on like, okay, how do I get better at it instead of actually getting better at it? But yeah, I think once that journey starts, you get more answers. You get, okay, whatever projects to build, got introduced. I think EDX had just started up with like their very cool courses and did CS50, did a one Python, like, and there were like very good problem statements with like probability, which they were trying to solve, like Python 101. I think then there was never looking back. You keep on working on cooler and cooler projects. And the idea was to build something cool. I think we even tried to build a game in our third year, which was on Facebook. Facebook had, I don't know how famous it is right now. Like I haven't been using Facebook for the last 2 or 3 years actively. So very out of that. But I think, yeah, looking back 2013, 2014, I think that was what I was doing. All right. So Vedansh, like you also did an internship, right, in your final year of college. So what were the key aspects that helped you really get a good internship, that too in Bangalore, and that too in the year when I was in my school? Because the environment was completely different and there was not much awareness about the same. Now everyone is talking about, okay, internships is important, you learn from XYZ resources, but back then there were not much resources. So how did you get that internship? Got it. So I did actually 5 or 6 internships. Mostly were online remote. So my first internship came in my second year, which was 2 folks who were working, I think, in IBM, slightly mid or like senior level programmers who were trying to start their own startup. And I found their blog post like on one of the Facebook groups, if I believe. I may be wrong. It's been so long. So I messaged them. I said like, I can code them, and they offered me 3,000 rupees per month to work with them. And it wasn't about the money. So I never even sent them my bank details. Like I worked there for like 2 months. I it would have been a good pocket money, but I really enjoyed while working. We were automating a lot of Excel sheet tasks and everything. Then there was like one of the very early developers of Paytm, back then 197, who was starting something of his own, and worked with him in my third year. Again, got introduced through one of the seniors of college. I think the same senior invited us. Like he has joined. He was a 2-year senior. In a third year, he was working in a company. He has left his company to join another startup, where he invited me and my friend to come join as interns, right? It was an offer. And so it was a very like that process. If I look at it, like the first 2 months, I went there, we worked on a bit of backend. The next call came 15 days before the exams that we have to deploy this. We have a somewhat backend ready. It was an IoT startup. We have somewhat like the full hardware setup ready, but we are still working on the sensor side and everything. But we need an app and we need it quick. Can you fly in tomorrow? And we will give you a fly out like 2 days before the examinations. And like engineering examinations, you only study in the last week or so. So like that sounded like extensive. Initially थोड़ा डर लगा था कि यार क्या पता नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि
ऐसे एग्जाम के बिल्कुल समय जा रहे हो. एंड आई थिंक बेस्ट थिंग अबाउट अ कॉलेज वाज कि हमारे एग्जाम्स या तो बहुत गर्मी में या बहुत सर्दी में होते थे, याद होगा. सो आई थिंक वो एक पार्ट था कि when I came back, I think my one day came कि मुझे एक्लेप्टाइज करना है कि नहीं, मैं इतने अच्छे वेदर से आ रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा धूप पे यहाँ पे गाजियाबाद में कि हाँ अब पढ़ाई शुरू करते हैं. I think so हाँ, and it happened in both of my semester exams. Not just one, final year के दोनों semester exam से पहले last 2 weeks I'm in Bangalore trying to like Bangalore से हम मुंबई जाते थे and बस राइड में भी कोड कर रहा हूँ कि नहीं वो कुछ 1-2 फीचर और ऐड हो जाए कि अच्छा देख जाए, है ना, डेमो अच्छा चला जाए. सो यस, बट या आई गॉट द इंटर्नशिप थ्रू लाइक उसमें मेरा कोई भी वो नहीं था, डायरेक्टली उन्होंने बुलाया और मैं चला गया था. आई हैड नो Alumni network was your primary source there. yes. And it is still one of the most reliable source to get a referral for an internship or a job. Like on online portal, you may get a response, you may not get a response. But एक बार आपका senior refer कर दिया तो कर दिया, you are so sure to get that, and that is very crucial for anyone. एग्जैक्टली. मतलब जब आपका छोटा स्टार्टअप होता है, जैसे राइट नाउ आई एम रनिंग अ स्टार्टअप, सपोज इफ आई नीड अ वीडियो एडिटर, राइट, if somebody has exactly messaged me like with details and कुछ चीजें हफ्ते भर पहले, even if I don't know the person, I'm saying okay, this person has messaged me or mailed me, right, and that instantly hit you कि नहीं यार इससे बात करते हैं. So यार always मतलब जो काम आप आज कर रहे हो वो दो चार दिन पहले या 1 महीने पहले होना होता है. So यार always सोच रहे होते हैं कि क्या मैं ये प्रोसेस स्किप कर सकता हूँ कि मैं एक जॉब पोस्टिंग डाल लूँ, वहाँ से हायरिंग करूँ एंड ऑल दैट. एटलीस्ट इनिशियली आई थिंक स्टेबलाइजेशन के बाद चीज़ें चेंज होती हैं. एंड स्पेशली फॉर दीज रोल्स, लाइक इफ यू नो समबडी जिसको अच्छे से रिएक्ट आती है या वेबसाइट आती है, फ्रंट पेज आता है, या जो भी आपको स्किल चाहिए ये कोई बना सकता है, फिर विल इंस्टेंटली कॉल देम कि आप फ्री हो क्या, मतलब कैन यू ज्वाइन. आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प्स. आर यू इन टच विद दोज पीपल? Totally agree, Vedansh. So now let's move to your startup journey and let's try to understand like what are the major limitations or flaws you see in the current education system and how does Devsnest school aim to address them. ठीक है, तो इसके पहले मैं थोड़ी सी अपनी 1 मिनट लेता हूँ, मैं थोड़ा सा जर्नी डालता हूँ कि डेवनेस्ट है क्या. सो हमने डेवनेस्ट इसलिए शुरू किया था, सो आई बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 years. मैंने अपने 3rd year से आई रियलाइज कि आई वॉन्ट टू हैव मोर टेक बडीज लाइक अराउंड मी जो कॉलेज में नहीं थे. हम 2-4 लोग बचे थे जिनको जो साथ में कोड कर रहे होते थे, एंड मी बी लाइक दे माइट बी साइलोज ऑफ अदर पीपल प्रोग्रामिंग, बट बहुत एक्सट्रीम या बहुत अच्छा टेक कल्चर नहीं था. सो आई स्टार्टेड टीचिंग इन माई 3rd year एंड आई बीन कंटिन्यूसली टीचिंग. तो 3rd year 5th year पढ़ाया, फिर यहाँ आके वी स्टार्टेड समथिंग ऑनलाइन जिसमें व्हाट्सएप के ऊपर आई यूज्ड टू टीच. इट्स स्केल्ड टू 15,000 पीपल पार्ट टाइम, मतलब ऐसे वीकेंड पे उसके ऊपर ऑटोमेट कर दिए थे टास्क वगैरह. फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विद नव गुरुकुल विच इज लाइक इंडियाज बिगेस्ट टेक नॉट फॉर प्रॉफिट. I might be slightly wrong, but it's like one of the biggest tech not-for-profits जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एजुकेशन देती है, मतलब टेक एजुकेशन देती है, उन्हें जॉब लगने में हेल्प करती है, काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट ऑफ कॉलेज. एंड देन आई स्टार्टेड डेवनेस्ट. सो डेवनेस्ट से हमारा ये मोटिव था कि हम एजुकेशन अफोर्डेबल बनाएं और हम स्केल पे बनाएं. सो स्केल पे मतलब कि टेक एजुकेशन का स्केल मतलब शुड बी लाइक कि आप 10,000 1 लाख पीपल को आप एक बार में अच्छे से पढ़ा पा रहे हो, जो कि मोस्ट ऑफ द जगह फेल हो जाता है. मतलब यूट्यूब पे आप टीचिंग दे सकते हो, सिर्फ मतलब आप कंटेंट दे सकते हो, बट कंटेंट के बाद जो पूरी इंटायर पेडागोजी कि इंसान ने सीखा नहीं सीखा, उसको कितना मजा आया, उसकी कितनी लर्निंग हुई, उसकी एक्चुअल लर्निंग कैसे इंप्रूव करे, वो वाला एक पूरा प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाट आवर फोकस वाज कि इन 2 चीज़ों को लेके हम चलेंगे. एंड वो हमने स्टार्ट किया था 2020 के एंड में. 2021 is when me and Kshitij started like the current version of Devsnest. So अभी हमने जो स्टार्ट किया है, आई थिंक वो है डेवनेस्ट स्कूल, जो कि हम बात कर रहे हैं 3 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, which is for students who have just completed the school or have completed school in the last 2 or 3 years or have completed their diploma. और उनको हम 3 साल का प्रोग्राम जिसमें वो आए और वी टीच देम टेक इन द फर्स्ट ईयर. इसमें मैं बाद में डिटेल में चला जाऊंगा कि क्या क्या पढ़ाते हैं, बट पहले साल बहुत अच्छे टेक, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स. उसके बाद 1 साल आप जाइए कंपनी में वर्क करिए, आप एक्चुअली वर्क एक्सपीरियंस गेन करिए,
एंड यू वर्क एट अ टॉप टेक कंपनी, आप बहुत अच्छे स्टार्टअप में जाइए, काम करिए. उसके बाद इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू योर जॉब, यू कैन टेक अ फुल टाइम ऑफर, एंड आपको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, आपको नहीं आना, अगर आपको आना है, कुछ और सीखना है, सो वी हैव स्पेशलाइजेशंस कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है, तो आप आइए, आपको पूरी अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छे एक्सपर्ट्स मिलेंगे. और ये अच्छे एक्सपर्ट्स मतलब अपनी अपनी इंडस्ट्री में टॉप जगह बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, है ना, अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं. ये पार्ट टाइम आएंगे, पढ़ाएंगे, ये फुल टाइम नहीं होंगे, और ये गाइड करेंगे. सो इस तरीके से हमने प्रोग्राम को रखा है. अब सॉरी थोड़ा लंबा हो गया ये, बट मैं सवाल पे कि अगर करंट एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आई थिंक उसमें 2-3 मेजर फ्लॉज जो दिखते हैं वो यही दिखते हैं कि एक तो लैक ऑफ इंडस्ट्री मेंटर्स है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में देखिए तो जो आपको सर्जरी करने सिखा रहा है वो एक्चुअली में सर्जन है. अगर वो नहीं या मतलब पहले थे, या राइट, दे हैव बीन पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस वेरी वेरी एक्टिवली. यहाँ पे टेक बहुत जल्दी चेंज हो रहा है. इट्स मूविंग वेरी फास्ट, एंड द पर्सन टीचिंग, मोस्ट ऑफ पीपल टीचिंग और मेंटरिंग haven't been professionals or haven't worked in the industry, either कभी भी नहीं, मतलब either never, or have been out of the industry for a very long time. So all the ideas and everything is very very outdated. So एक लेवल तक कुछ कोर सब्जेक्ट्स बहुत जरूरी हैं, कुछ कोर चीजें बहुत जरूरी हैं, बट उसके ऊपर जो आपको सिखाना है उसके लिए यू नीड पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री. वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कट ऑफ है. यही सेम चीज आती है करिकुलम में भी. ये करिकुलम जिन कॉलेजेस का बहुत जल्दी रिवाइज भी हो रहा है वो भी 3-4 साल पहले चलता है कि जैसे, एंड जो साइकिल्स होते हैं या कुछ, जैसे एक लेवल पे हम जो एंड ऑफ द डे एप्लीकेशन पढ़ते हैं वो एक लेवल एब्स्ट्रैक्शन पे ही पढ़ते हैं कि जैसे वी विल लर्न जावास्क्रिप्ट, वी विल लर्न रिएक्ट, या वी विल लर्न द न्यूएस्ट फ्रेमवर्क, राइट, जिस पे कोड करना है. तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपके करिकुलम में कुछ वो जगह हो जहाँ पे आपको नया फ्रेमवर्क या नई चीज़ें जल्दी इंट्रोड्यूस करना. इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोर सब्जेक्ट्स या कोर चीज़ें नहीं पढ़ानी, वो पक्के से आपको यू हैव टू टीच दैट, बट दैट वो अगर 5 साल में भी हो रहा है विच इज़ फास्ट, वो फ्रेमवर्क पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है, राइट, एंड विच इज़ लाइक द करिकुलम बिकम्स आउटडेटेड. आई थिंक देयर इज, मतलब देयर आर 2 मेजर रीजंस. एंड उसके बाद आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है कॉलेज का डिग्री पर रादर देन स्किल्स पर. तो अगर फोकस चेंज होगा तो ये सारी चीज़ें चेंज होगी. मतलब अगर वो लेंस से देखेंगे कि हमारी कितनी अच्छी प्लेसमेंट हो रही है, कितने बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है, एंड kudos to some other colleges including our own college, जिनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेंस चेंज हुआ है कि दे हैव बीन वेरी स्ट्रांगली फोकस्ड कि हाँ स्किल्स किन किन जगह इंपॉर्टेंट है, वो स्किल्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से पार्टनरशिप कर सकते हैं या अपने करिकुलम में ला सकते हैं. मतलब बहुत जगह कॉलेज आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो पूरा करिकुलम या इंडस्ट्री से क्या यूनिवर्सिटी को कंटिन्यूसली मतलब बात करें, भेजें, करिकुलम चेंज करवाएं. एट दैट टाइम आई थिंक इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स हेल्प अ लॉट, बट ये एक मेजर प्रॉब्लम है. ठीक है, सो डेवनेस्ट स्कूल इसे कैसे सॉल्व करता है कि एक तो करिकुलम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि करिकुलम बहुत अच्छा होना चाहिए और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए करिकुलम के साथ. कि तो हम कैसे बोलते हैं कि हमारा जो बूट कैंप होता था 7 महीने का, उसमें हम 10 प्रोजेक्ट्स बनवाते थे और उसके बीच में हैकेथॉन्स भी होते थे. हैकेथॉन्स ऑप्शन होते थे बट प्रोजेक्ट्स कंपल्सरी होते थे. इसमें भी हम पहले 1 साल में ही 5+ प्रोजेक्ट्स बनवाने की फोकस करेंगे विच आर स्लाइटली डिसेंट साइज प्रोजेक्ट्स. फिर आपके हर सब्जेक्ट में एक स्मॉल प्रोजेक्ट है कि जो आपका एंड असाइनमेंट है, और फिर उसके बाद 3 महीना आपका जो मेजर प्रोजेक्ट वाला काम है वो आपके पहले साल के बाद ही है. तो एक बहुत ही हैंड्स ऑन लर्निंग एंड करिकुलम वेरी इंडस्ट्री अलाइंड, क्रिएटेड बाय पीपल जो कि एक्चुअली मतलब स्टार्टअप्स के CTOs हैं या टॉप टेक कंपनीज में काम करते हैं, कि उन्हें पता है कि जब हम हायर करते हैं हम किन चीज़ों को देखते हैं. हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टॉप फ्रेमवर्क्स को देखते हैं, हम काफ़ी चीज़ें कोर को भी देखते हैं एंड उस पर फोकस होना चाहिए. आई थिंक उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो आपको सिखा रहे हैं, एक तो करिकुलम बना दिया इंडस्ट्री मेंटर्स ने, बट जो सिखा रहे हैं उसमें भी इंडस्ट्री मेंटर्स होने चाहिए. अब अगर हम इसकी बात करें तो इंडस्ट्री मेंटर्स कभी भी फुल टाइम लाना आपको, जब तक आप हार्वर्ड नहीं हो या बहुत टॉप कॉलेज नहीं हो, आपके लिए बहुत मुश्किल है. आप बोल रहे हो कि एक इंसान जो एक स्टार्टअप का CTO है जो कि हायर करता है, उसको पढ़ाने का शौक भी है,
they want to give back. They don't even need मतलब cash for that. बट उनके लिए वो एक लिमिटेड समय है, उनको ट्रैवल करना. कॉलेजेस अक्सर शहरों के बाहर होते हैं, वहाँ के बाहर. अगर आप उनको पार्ट टाइम लाते हो, दे आर लाइक वेरी वेरी हैप्पी टू डू इट. कि उनके पास पॉकेट्स होती हैं टाइम की, जहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं यार हम यहाँ पे इस चीज़ के बारे में, एंड दे डोंट वांट टू डील विद मोटिवेशन. मतलब उनको मोटिवेशन आके एक लेक्चर नहीं देना, उनको 15 दिन 20 दिन जाके डेफ में पढ़ाना है. सो आई थिंक दोज टाइप ऑफ टीचर्स, इफ यू कैन गेट दैट कैन ओनली हैपन, लाइक दैट कैन मोस्टली हैपन इन द रिमोट से. थोड़ा ईजी है रिमोट में. आई थिंक एक चीज पे हम और बहुत फोकस करते हैं इज पीयर लर्निंग. कि एंड ऑफ द डे जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारी डिस्कशन से होती है, डिबेट से होती है, डिस्कशन से होती है. सो स्टूडेंट्स को इक्वल समझना कि आप आइए, आप साथ में एक दूसरे के साथ पढ़िए, आप डिबेट करिए, आप डिस्कशन पूछिए, आप सवाल पूछिए. सपोज मैं एक टॉपिक समझा रहा हूँ, वो उतनी क्लैरिटी से शायद मैं ना समझा पाऊँ, बट जिसने तुरंत सीखा है वो चीज बहुत अच्छे से बता पाए, या वो डाउट जल्दी से सॉल्व कर पाए. आई थिंक दैट वी हैव ऑल एक्सपीरियंस. अपने एग्जाम्स पे अपने दोस्तों से एक रात पे सब समझ लेते थे, एज कम्पेयर टू गोइंग बैक कि कुछ चीजें. सो पेयर लर्निंग इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट. कि आइए साथ में कोड करिए, बिल्ड करिए प्रोजेक्ट्स, एंड वो कंटिन्यूसली रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा. कि आर बिल्डिंग समथिंग, यू आर सीइंग द आउटपुट ऑफ. वो सिर्फ मार्क्स से लिमिटेड नहीं है कि एक आपकी मार्कशीट आ रही है कि हाँ 80 आउट ऑफ 100 आए, 90 आउट ऑफ 100 आए. So ये चीजें हैं डेवनेस्ट टेक स्कूल में, उसको थोड़ा यूनिक बनाती है. आई थिंक इसके बाद हम पूरा 12 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस होता है कि आप जाके आप पूरे टाइम इंडस्ट्री में काम करिए, और हम उसमें हेल्प करते हैं आपको कनेक्ट करने के लिए. हम रोज अवेलेबल रहते हैं. आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जॉब स्विच करनी है, बीच में इंटर्नशिप स्विच करनी है, ऑल ऑफ दैट. बट वी रियली वांट कि आप इंडस्ट्री का एक्सपोजर कॉलेज के ड्यूरेशन में ले लीजिए, जिससे आपको एक्चुअली में समझ में आ जाए कि रियलिटी क्या है, कि मेरा काम क्या होगा, मुझे किस चीज पे फोकस करना है, मुझे किस टाइप का कोड लिखना है ना. मैं कहाँ पे वीक हूँ और कहाँ पे स्ट्रांग. तो वीक पॉइंट्स पे काम, एंड में स्पेशलाइजेशन आता है. कि अगर आपको किसी एक दो टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसके बारे में डेप्थ में समझ सकते हैं. या अगर आपको अपना स्टार्टअप भी खोलना है तो आप उसके लिए मतलब कम से कम बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, आपको हेल्प चाहिए, तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम जो कि काफी अच्छे कॉलेजेस में होता है, जो आईवी लीग कॉलेजेस है, तो उस टाइप का आपको एक सपोर्ट मिल पाए कि आपको 5 to 10 इंडस्ट्री मेंटर्स हैं जिन्होंने बनाई है प्रोडक्ट्स, जिन्होंने स्केल करे हैं, उनसे आप बात कर पाओ, वैलिडेट कर पाओ. एक आपको वो वाला एटमॉस्फेयर मिल पाए, स्टार्टअप एटमॉस्फेयर मिल पाए, या स्टार्टअप गैराज टाइप का एटमॉस्फेयर मिल पाए, जो कि आई थिंक कॉलेजेस में काफी लिमिटेड है. अगर मिसिंग नहीं बोलेंगे तो इट्स वेरी वेरी लिमिटेड उसका स्कोप. सो ये चीजें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं. And also, does Devsnest school में do you cover the core subjects? Yes. So हम पहले एक साल में, अब जैसे हम बैकएंड पढ़ा रहे हैं तो हम डेटाबेसेस के काफी डेप्थ में जाएंगे कि डेटाबेसेस क्या होते हैं. हम उन चीजों के साथ बिल्ड करके हम अच्छे से डेप्थ में जाते हैं. और फिर 12 मंथ्स के बाद, मतलब जब आपने पहले 2 साल आपके हो गए, उसके बाद हम उन सब्जेक्ट्स को बहुत ही डेप्थ में, मतलब सिर्फ 3 महीने हम ये कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं. कि नेटवर्किंग हो गए, डेटाबेसेस हो गए, उनको हम एक बार दोबारा और रिवाइज कराते हैं कि आपको मतलब अब आपको समझ में आता है, अब आपने एक लेवल बना लिया है, अब आप रिलेट कर सकते हो. आपके लिए थ्योरी नहीं है, अब आपने नौकरी भी कर ली, अब आपने बना भी लिए प्रोजेक्ट्स, नाउ यू कैन रिलेट. तो अब सिस्टम डिजाइन वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा. Yes. So, okay, thanks, Vedansh. And then let's move to the next question. Like, what changes or reforms would you suggest in the existing education system to better prepare students for the rapidly evolving technology industry? Again, if I'm addressing it, education system एक बहुत ही जेनरिक टर्म है. उसमें जो लोग करिकुलम बना रहे हैं, मतलब I really don't know किसको एड्रेस करें. So I just address the colleges. कि I think colleges should understand कि either they can help a student learn, or they should be able to give them a lot more free time to explore. कि या तो आपको पता है कि नहीं, we will teach you, we will हम projects करवाएंगे, हमारे करिकुलम में जो नई चीजें हैं वो हम लेकर आएंगे and हम पढ़ाएंगे. So we will teach, like we will get you industry exposure, we will help you teach, or we will give you the freedom to learn.
आई थिंक बस यही एक चेंज भी अगर हो जाए, so that solves like a very huge percentage, I think 50-60% of the problem. थोड़ा और एक्सपैंड करूँ जो पहला पार्ट कि करिकुलम एंड प्रोजेक्ट्स को इंडस्ट्री की लेंस से देखना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करना, है ना. एंड एक कॉलेज के पास एक डिसेंट फ्रीडम होता है, कुछ पार्ट टाइम सब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनके कंट्रोल में होते हैं. वहाँ पे अगर वो चेंजेस लाना शुरू कर दें तो एक काफ़ी डिसेंट चेंज हो सकता है. ये कम से कम स्टूडेंट्स उस तरफ फोकस तो करें कि अच्छा हमें बिल्ड करना है, वी हैव टू शो समथिंग नेक्स्ट एक महीने. मतलब वो फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है मेजर जिसपे सब फोकस कर रहे होते हैं, सिर्फ वो नहीं. आई थिंक वो बिल्डिंग वाला फोकस कि लेट्स बिल्ड समथिंग वो आना चाहिए. Else, I think colleges should say, you go out and build something. We'll give you free time. We'll be a lot more relaxed at attendance level, at your marks level. कि parents को phone नहीं करेंगे. And I think उतना ही कर दे तो भी बहुत, मतलब I think that's one of the major problems which I see here. And it's very कि student आता है वो यही कहता है कि कोविड खत्म हो गया, अब मुझे पढ़ने के लिए कम समय मिलेगा क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है 9 to 5. Which is such a sad thing कि ये सिर्फ एक डिग्री के लिए हो गया. It's not true for all colleges, but आप सिर्फ डिग्री के लिए वहाँ बैठे हो 8 घंटे. बट मतलब कॉलेजेस का मेन पर्पस था एजुकेशन लर्निंग एंड उसको सर्टिफाई करने के लिए डिग्री. बट वो सिर्फ डिग्री हो कि सिर्फ सर्टिफिकेशन है और बाकी चीजें आपको खुद से करनी है. सो अगर रिलैक्सेशन मिल जाए तो दैट विल बी, आई थिंक दैट वुड बी रियली रियली कूल अगर इतना हो गया. So I do personally believe that degree can only get you a job, but it will not assure your survival in that industry. Only your skills, based on your skills only, you can survive. Degree देख के हो सकता है कि after passing out from the college, you might get a job, but you might not survive because you don't possess the skills to remain in the industry. So like initially when you are in college or when you are joining anything, starting say you should have that industry oriented mindset, and that should be your prime focus, and eventually parallelly have a little bit focus on the college exams as well. Otherwise, what's the purpose of being in a college if you don't get a degree? So there are a lot of things that a student has to manage now, because the student has to keep both of his feet in two separate boats. One is industry knowledge and another is the college environment, which is, and both of them are sadly moving in the opposite directions. So all of the stress is coming to the student. So that is, I think that is actually the problem Devsnest school is trying to solve, bringing undergraduate degree and industry experience and skills under one roof, so that even this is also a 3-year program. That is also a great thing, because usually the BTech will take you 4 years, and if you are combining with MTech, it might fetch up 6 to 5 years in total. So you're also saving a lot of time for the students. And in the second year, you are giving them, from the right second year, you are giving them 12 months of full-time in work experience. So that is also something really worth. And I really wished I should have been a part of this while I was in college. So now I feel like I have wasted so much time. I might have gained a lot of experience as well. So yeah. So let's move to another question that is very much connected to what we are discussing right now. So, why do you think that majority of the engineering pass-out graduates are jobless, and why is there such a shortage of people with skills? Got it. So, majority of engineering graduates are jobless. I think mostly because the focus, the college focus is on degree. The college does not have a focus on skills. And if I go back to my time again, most of my peers were either studying for MTech or studying for GATE. So, and those all are great examinations, they all open a very great future, but they have a very limited selection criteria.
You're playing the game which got you here again. And most of the people really don't know why they are playing it. Like, कुछ लोगों का फोकस बहुत क्लियर है कि उन्हें रिसर्च करनी है या उन्हें प्रोफेसर बनना है या देयर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स व्हिच दीस प्लेसेस अनलॉक या किसी को बहुत जेन्युइनली किसी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है जिसके बारे में बट इफ यू लुक एट मोस्ट पीपल आर नॉट लाइक दैट. दे आर डूइंग दैट बिकॉज दैट लुक्स लाइक द नेक्स्ट रैट रेस एंड फ्यूचर क्लियर नहीं है. सो वहां पे ये बताना कि अगर आप स्किल्स लेते हो और अगर साथ में कोई नहीं करना, अगर कॉलेज का फोकस नहीं है, अगर आपके पीयर्स नहीं कर रहे, अगर आपके सीनियर्स नहीं है जिन्होंने उस बात से सक्सेस ली है, सो जहां पे आपको ऐसे लोग दिखेंगे वो है इंटरनेट. एंड इंटरनेट इज अ वेरी, मतलब इंटरनेट पे आप जो कंटेंट देख रहे हो आपको वो कंटेंट मिल रहा है. सो अगर आप टेक में इंटरेस्टेड हो और आपने एक बार अपनी कोई भी फीड, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, मतलब इंस्टाग्राम, लिंक्डइन तो चलो ठीक है इस वो, बट आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब फिर आपने एक बार टेक की तरफ कर दी तो आपको तो बहुत कंटेंट मिलेगा एंड यू विल गेट इंस्पायर्ड कि आप पढ़ाई करो. वरना मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन हो रहा है कि यू आपको वो नहीं दिखेगा कि यार टेक में भी एक करियर बना सकते हैं. एंड आप भले आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, आईटी पढ़ रहे हो या वन ऑफ द अदर स्ट्रीम्स व्हिच इज वेरी वेरी कनेक्टेड टू कंप्यूटर साइंस आप स्टडी कर रहे होगे, बट आपका फोकस, क्योंकि नोबडी एल्स इज डूइंग दैट, कॉलेज का फोकस नहीं है, आपके पीयर्स का फोकस नहीं है, आपके सीनियर्स का फोकस नहीं था, आप सिर्फ उन लोग को देखोगे कि आपके सीनियर्स में से जो 3 लोगों ने हैव मेड इट थ्रू एमटेक, थ्रू कैट, जो आईएम्स गए हैं, एंड यू से कि अभी भी सक्सेस रेट इतना कम है एंड आई एम स्टिल प्लेइंग दैट गेम. एंड इट्स ओके टू प्ले दैट गेम अगर आपका वाई क्लियर है. इट्स नॉट ओके टू प्ले दैट गेम अगर आपका वाई क्लियर नहीं है. अगर आपको जॉब चाहिए अच्छी, अगर आपको अच्छा टेकी बनना है, या अगर आप अनश्योर हो, तो टेक इज वन ऑफ द राउट्स जो कि आफ्टर अ ईयर, मतलब अगर आप एक साल अच्छे से मेहनत करते हो, आप अपने काफी बैरियर्स क्रैक कर सकते हो, राइट? मतलब एंड जो भी आपके मतलब फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं या काफी सारे और बैरियर्स, अच्छी जॉब ले सकते हो. आई थिंक इसका मेजर रीजन तो यही है. एंड हमने कॉलेज के रीजंस हमने फोकस किया ही था कि कॉलेज जो है कि आउटडेटेड करिकुलम है ना, मेंटरशिप थोड़ी सी या टीचर्स थोड़े से इंडस्ट्री फोकस नहीं है. एंड आई सी दैट, मतलब आई डेफिनेटली, मतलब I've been a big fan of what Kite has done over the last 3 or 4 years, like extensively, very focused TPO, very focused HODs, बहुत ही extensively students को push करते हैं, वो करते हैं कि नहीं यार ये वाला काम होना है, बनानी है projects. So, and I see some of the colleges focus, but like we are in touch with like 500 to 2,000 colleges अभी. इसमें like they are outliers. 5 कॉलेज हैं ऐसे जो ऐसा काम कर रहे हैं. मेजॉरिटी वो नहीं कर रहे, एंड वी आर नॉट इन टच विद लाइक द टॉप 50 कॉलेजेस. टॉप 50 100 कॉलेजेस में ये हो रहा है, बट ये देखना होगा ना कि 5,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है. यस राइट, समवॉट. सो वहां पे ये काम नहीं हो रहा है. आई थिंक इसी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एंड टेक में आई थिंक एक मेजर पार्ट ये भी है कि आपको मे बी 10-15,000 की जॉब मिल जाए, बट आई थिंक एक लेवल पे अगर आपने TCS, इन्फोसिस या आपने कोई भी सर्विस कंपनी जो बोलते हैं कि हम आपको we will teach you the skills, अगर आप वो नहीं क्रैक कर पाए, आप ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे वो कंपनीज नहीं आती है, तो आपको एक अच्छी जॉब क्रैक करने के लिए एक डिसेंट लेवल मेहनत करके स्किल्स लेनी पड़ती है. तो स्टार्टिंग का जो एंट्री बैरियर है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा इंक्रीज ही कर रहा है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ पीपल कमिंग. सो उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको एक इनिशियल पुश मिल गया और फिर आप पढ़ते रहे. आई थिंक दैट ऑल्सो इज अ फैक्टर नाउ. You get there, you study, मतलब आप अच्छे से 8-10 महीने तो मिनिमम आप स्टडी करो एंड फिर आप जॉब. Yes. So to summarize, like what you spoke, कि majorly जो college के alumni होते हैं, they are playing a big part in shaping the culture of the whole college. So alumni को देख के ही other juniors will go on the same path, and even the placement heads and the HODs will also be on the same lines that okay, this alumni was on this track and he achieved this particular goal. Let's say आपका example consider करते हैं, so you were more into very much into coding and code contributions, open sourcing and other stuff that made you land on a good job in a hacker rank. And seeing your success, the college had an example कि okay, so if
we had a student जिसने ये path try किया है, then we should also inculcate the same in our curriculum as well, in our college as well, and उसको ही they try to fix it and they try to improve it with each year. But there are many colleges who don't have a success story. जहाँ के alumni का culture ही ऐसा था कि they only have to go via the gate, they have to only go crack UPSC and other stuffs, and engineering is just way to get a degree and then prepare for another exams. So ऐसे colleges में the awareness that you are creating through Devsnest is very much needed. And although we had a great example of Kite who has shifted the curriculum towards coding and all, but again there's a vast majority of colleges across India जहाँ पे ये information, ये like feasibility, ये knowledge tech की and even this experience कि हाँ tech में भी अच्छी job मिल सकती है and they can do wonders in this college, ये अभी तक सब जगह नहीं पहुंचा, and that is what I guess Devnet is trying to do and spread the word across the colleges. So I think this is much needed. इसमें एक part और है. You see, we ran a 7-month bootcamp. We had 12,000 students. We talked to like a lot of colleges. Now there were colleges like there were outliers, top 1%. जैसे Kite था, एक दो college थे जिन्होंने कहा कि we will share the data continuously. We want the students who are active. We will help them out like किसी भी तरीके से कि to make their life easier. Then there were colleges कि we will share the data to the students, but we won't help them out कि हम attendance या किसी भी और चीज़ में students को बिल्कुल help नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स को ये कॉलेज के एग्जाम्स या कॉलेज के पूरे 9 to 5 के बाद करना है. उसके कॉलेज के जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स है उसमें भी इसको ऐड नहीं करेंगे. एंड देन देयर वर कॉलेजेस हु केम ऑन अ कोर्स फॉर लाइक 10 days 15 days, लाइक कि टोटली फ्री प्रोग्राम है, ना आपको कुछ पे करना ना बच्चों को कुछ पे करना, एंड अच्छी जॉब लगेगी तो आपका ही नाम होगा. मतलब आपने पोस्टर लगाओगे है ना, आप फीस बढ़ाओगे, मतलब जस्ट सेंड अस द स्टूडेंट्स, लाइक इट्स अ विन फॉर यू, राइट. एंड देन लाइक कि मतलब I got like 5 students after like 10 calls from like at least 15 of the colleges. So वो एक difference कि I don't know the reason of it, और I won't say it out publicly. Again मुझे वो मतलब बहुत उसके podcast में नहीं, but that's a sad reality. कि वो win-win situation सब भी अगर create हो रही है तो उसको मतलब some of the colleges are not very aligned to accept that. And I'm very very happy कि जो वो top 1% वाली bucket है जब वो बढ़ती जाएगी, because colleges would need like that industry connections कि आए साथ में काम करें, not just with Devsnest, मतलब with thousands of other partners, you work together with us. Yes. To help shape the world. So मतलब मैं problems की थोड़ी कम बात कर रहा हूँ. I won't go deep. मतलब मैं बहुत ऐसे generic one-liners की ये problems है. I'm looking more of a solution point of view, and I think that's definitely changing. मतलब COVID is one thing which really escalated that. I think tech jobs भी थोड़ी increase हुई, तो जिससे tier 3 colleges या मतलब tier 3 के भी थोड़े end route पे जो colleges आए, उनसे भी decent placements होना शुरू हुए. So colleges को भी एक reward system उनका hit हुआ कि we should focus on that. इससे हमारे पास भी अच्छे results आएंगे. We will be able to attract a lot more students, better talent, all of that. So I think that has really helped, and I think, and students also. I think last 2 साल जब वो online है तो दिख रहा है अच्छा कॉलेज नहीं जा रहा 9 से 5 तो क्या करें. I think let's learn, and वो उसने कल्चर सेट कर दिया है. वो कोविड के बाद भी सेट है, मतलब उसका 60% तो सेट है ही कि स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूअसली कोडिंग इवन आफ्टर कि नॉर्मलेंसी आ चुकी है 1 साल से अराउंड, एंड अभी भी स्टूडेंट्स कोड कर रहे हैं. So, like, to patient, that is one of the solutions. कि college में, if we get 5 people success in a college, right, in the next 2 or 3 years, that college will change, because it will inspire so many people to study hard, to look for a lot more alternative options. It does not have to be tech. मतलब tech लौता मैसिया नहीं है कि उसी में सारी jobs है, but to look out कि अच्छा नई इंडस्ट्री नई जॉब्स कहाँ हैं, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा if your seniors have one. Yes. So Vedansh, let's talk about Devsnest again. So when is that Devsnest school batch is starting, and how many folks you are trying to take into that curriculum?
So for this year, it's only 30 students. We will be starting in September. We are accepting students for this year. So the application process is you go in, you sign into the website, and then like we take a test, which will be like a maths and a logical reasoning test. It's not ideal. Like we plan to change the test a lot, like the next year onwards. And then we will have like an interview with either me or Kshitij, one of the co-founders. And after that, we will send you a mail with like acceptance, rejection, or a wait list. So we only plan to take 30 students because we know this is the first time we are doing it. We have been running boot camps, and we want to be extensively sure that we help you get your internship after the first 15 months and like a very good tech job after like the end of 3 years. So that's one of the focuses. Yeah. Okay. So this was really amazing podcast, Vedansh. Thank you for joining us today. Thank you, Vedant. Thank you so much for having me here. It was really nice talking to all of you. And if anybody does not know, like Vedant was one of the students of Devsnest when, like, before it became Devsnest, I started teaching in the pandemic in my second batch, Vedant joined, and I taught him for like 3 months. And his success is his success. I'm not taking the credit for that, but he is he was very, very focused, and I'm very happy that how you're doing. Really love your content. Really love like all the JavaScript tutorials you have there, and we share that a lot in Devsnest. So keep building what you're doing. We really need more teachers like you. Thank you. Thank you for that kind words, Vedansh. Thank you.